Students, in last class we have done about the functions of leaves. We have discussed about the transpiration, process of transpiration. It is the loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of the plants. And today we will do activity 8, aim to show that plants transpire. This activity will let us know that plants transpire. That means it loses water in the form of water vapor. Materials required: a well-watered plant, 2 transparent plastic bags and some tape. Method: tie a transparent plastic bag around the plant and place it in the sun. You have to tie एक plastic bag लो, उसको wrap कर दो, tie कर दो around the plant और उसको sun में रख दो. Place it in the sun. Tape the mouth of second plastic bag and keep it also in the sun. Second जो plastic bag है उसको भी tape लगा के आप sun में रख दो. Observe after half an hour के बाद check करो. What do you observe? You will be able to see water droplets on the inner side of which plastic bag? आपने 2 प्लास्टिक बैग्स रखे थे, तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व? आप कौन से प्लास्टिक बैग के इनर साइड में वाटर ड्रॉपलेट्स को देखोगे? नोट: रिमूव द प्लास्टिक बैग फ्रॉम द प्लांट आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्टिविटी. यू हैव टू रिमूव द प्लास्टिक बैग को रिमूव कर दो. जो आपने प्लांट के अराउंड लगाया था उसको रिमूव कर दो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एक्टिविटी. एंड यू विल नोटिस कि जो आपने प्लांट के सराउंडिंग में जो प्लास्टिक बैग लगाया था उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट थे ड्यू टू ट्रांसपीरेशन. दिस शो अस दैट कि जो ट्रांसपीरेशन है इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. बाद में वही वेपर्स कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में फॉर्म हो गए थे प्लास्टिक बैग के ऊपर. नेक्स्ट इज modifications of leaves. Like other parts of plants, leaves also sometimes modify to perform some special functions other than those mentioned above. Those mentioned above means जो हमने पढ़ा था कि it helps in synthesis of food and it also perform a function that is transpiration. Other than that, there is modification of leaves also. Similarly, as we have studied in modification of roots, stem. So let's start. First one is, in some plants such as cactus grows in desert area where there is scarcity of water, leaves are modified into spines. We have already discussed about this when we were studying about the modification of stem. That time हमने read किया था कि in desert plants like cactus जो leaves होते हैं they are modified into spines. This is done to reduce the loss of water from leaves due to transpiration. दिस इज़ डन इसलिए होता है कि लॉस ऑफ वाटर जो है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन वो रिड्यूस हो जाए. दिस ऑल्सो एक्ट एज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स टू प्रिवेंट एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग देम एज वेल एज ये जो स्पाइंस है एक डिफेंस मैकेनिज्म भी एक्ट करते हैं जिसकी वजह से उनको स्पाइंस की वजह से जो एनिमल्स हैं वो उनको ईट नहीं करते. इन सच केसेस द स्टेम टेक्स ओवर the function of leaf and performs photosynthesis. We have already studied about this कि in such plants, desert plants, ये जो stem है they get modified into leaves and they performs the function of photosynthesis. Hence the stem in a cactus plant is capable of carrying out the process of photosynthesis. That's why we can say that कि cactus plants में stem है it can carry out the process of photosynthesis. Photosynthesis can occur in the stem of cactus. Next modification of leaf is, in some insectivorous plants such as pitcher plant, the leaf is modified to form a pitcher for capturing insect. Like insectivorous plants, as the name indicates, insectivorous plants, that means insect means these are those plants which feeds on insect, जो feed करते हैं insects पे. For example, pitcher plant the leaf is modified to form a pitcher for capturing insect. आप देख सकते हो, you can see here
कि ये जो लीफ है इट इज मॉडिफाइड एंड मेड लाइक अ शेप इज लाइक ऑफ पिक्चर, दैट मीन्स जो घड़ा होता है जिसका लॉन्ग नेक होता है उस शेप में ये जो लीव्स हैं दे आर मॉडिफाइड. दिस इज पिक्चर प्लांट to capture the insect. Then insectivorous plants are found growing in regions where the soil is deficient in nitrogen. ये plants वहाँ present होते हैं, वहाँ grow करते हैं जहाँ पे soil में नाइट्रोजन की deficiency है, नाइट्रोजन गुड अमाउंट में present नहीं है. To make up for this deficiency they have developed various मेथड्स ऑफ ट्रैपिंग इंसेक्ट. फिर इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए टू मेक अप फॉर दिस डेफिशिएंसी दे हैव डेवलप्ड वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रैपिंग इंसेक्ट. उनमें प्लांट्स में बहुत सारे वेरियस मेथड्स हो गए हैं जो क्या करते हैं, जो ट्रैप इंसेक्ट को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं. एंड फीडिंग ऑन देम फॉर नाइट्रोजन, एंड उनको फीड करते हैं, उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं. These plants however can also prepare their own food through photosynthesis. However, these plants can also prepare their food through the process of photosynthesis. You can see the green leaves here, and this plant contains, see, when the insects come in contact of this picture, it goes inside. It is attracted by good smell and nectar. After this, all the pitcher contains lid. यहाँ पे you can see here all pitcher has lid. उनके ऊपर क्या है, ढक्कन है. So when insect is attracted और insect अंदर pitcher में चला जाता है, then this lid is closed and it releases some chemicals which digest or which does the breakdown of insect, जिसकी वजह से insect का breakdown हो जाता है उन chemicals की वजह से, and वो उनमें जो भी नाइट्रोजन होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं पिक्चर में. नेक्स्ट इज इन सम अदर प्लांट्स द टिप ऑफ लीव्स इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट. इन सम प्लांट्स, सम केस ऑफ प्लांट्स, जो टिप होती है लीव्स की, लाइक टिप यू कैन सी हियर आल्सो इन पिक्चर प्लांट, दिस टिप, दिस काइंड ऑफ टिप, it means that pointed end, it is modified into tendrils. we know what is tendril. tendril क्या है, thread like structure होता है जो provide करता है किसी भी plant को extra support के लिए. to provide extra support to the plant, जो भी उसके nearby objects होते हैं वो वहाँ पे coiled हो जाते हैं ये tendrils and support ले लेते हैं. for example garden pea and gloriosa. you can see the image of gloriosa and see here the tip is modified, see, modified into tendrils, right? और भी long tendrils भी form करते हैं. next we will do practice zone. give an example of the following: a plant with parallel venation in its leaf. we have already discussed it many times that maize, banana, grass have the parallel venation in its leaf, and we have also discussed कि इनकी roots कैसी होती हैं. the plant which is having parallel venation उनकी roots fibrous होती है, and the plant which is having reticulate venation उनकी roots taproot system होते हैं. next is a stem that is full of starch. a stem that is full of starch, we have discussed about the modification of stem, and like potato, onion tha, it is used for the storage purpose. so you can write the example potato. it contains more amount of carbohydrate, and we have already discussed that starch is a type of carbohydrate. next is a leaf that performs the function of protection. this also we have discussed today also, and in a last class also we have discussed about this, that such kind of leaves are present in desert areas, desert plants, and these leaves are modified into spines. so spine protect them from animals. okay, next is an insectivorous plant, and the example is pitcher plant, or there is many more like Venus flytrap is also an insectivorous plant. next is a modified stem. modified stem we can write here cactus. in case of cactus plants the stem is modified into leaf, and it performs the function of leaves, that is photosynthesis.
That's all for today. Thank you and have a nice day.